morning fourth class. How are you बेटा? हमने चैप्टर 3 द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आपको बुक में अच्छे से क्लियर करवाया था। तो आज उसका चैप्टर डीजी में समझा रही हूँ मैं। इसमें हमने क्या किया था, माउंटेन्स के बारे में रिवाइज किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम आपको माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताएंगे एंड प्लेट्यू के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या था, हिमालय के बारे में भी रिवाइज किया था, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालय। तो आज हम इस चैप्टर को डीजी में अच्छे से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। All about mountains. What are the things that you think of when you see this triangle? What are the things that you think of when you see the triangle? कहते हैं कि what are the things, आप कौन सी चीजें सोचते हो, देखते हो जब आपने इस ट्रायंगल को सोचा। देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। Surely the hungry ones may have thought of sandwiches. What about our mathematicians? Maybe you thought about set squares. And what would our artists think about if this triangle was placed on an empty landscape? A mountain, for sure. So why are mountains drawn as triangles? Simply because, like most triangles, mountains too have high pointed peaks and a broad base. Let us look at some interesting facts about mountains. What are mountains? Mountains are parts of the Earth's crust that have risen to great heights above their surroundings. A series of mountains is called a mountain range. Some mountains even reach into the clouds. High mountains are usually snow-capped. As we travel higher up the mountains, the climate becomes colder. What about the lower parts of the mountains, where the climate is not very cold? Would people settle here? Very few people would settle here. The steep slopes of mountains do not allow farming. At greater heights, there is less oxygen, making it difficult to breathe. Would you believe if someone told you there are mountains hidden under the seas and oceans? देखिए बेटा, हमने माउंटेन की किया था। माउंटेन क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत। कहते हैं जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर हम चलते जाते हैं तो वैसे वैसे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो जमीन का एरिया वहाँ पर हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। जैसे जैसे माउंटेन ऊपर चढ़ता जाता है, हम माउंटेन पर चढ़ते जाते हैं, या वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको ब्रीथिंग की, सांस लेने की समस्या हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा माउंटेन। कहते हैं अगर आप विश्वास कर सकते हो कि माउंटेन जो है, पर्वत जो है, पहाड़ जो है, वो समुद्र और महासागरों में भी छिपे हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू उसको डिस्कस करने के लिए। और माउंटेन क्या है, माउंटेन पे खेती करना भी मुश्किल है। Yes, the mid-Atlantic Ocean ridge in the Atlantic Ocean is one famous example. Types of mountains. Have you wondered how mountains rose to such great heights? There are many ways in which mountains were formed. This also defines their types. What is this girl doing? She has stacked the layers of the clay dough and is now squeezing the dough from both sides. Hey, the dough layers have folded just like a mountain. This is exactly how
the fold mountains were formed. The land on the Earth's crust is pushed up to form these mountains. The fold mountains formed over 200 million years ago are the old fold mountains. Weathering with the times, their slopes become gentle at low altitudes. The fold mountains formed about 10 to 25 million years ago are the young fold mountains, which are rugged and lofty. Look at these images of the Aravalli mountain range in India and the Rocky Mountains in North America. Do you think there's a difference in their range? देखिए बेटा, ये है माउंटेन्स के बारे में। इंडिया में क्या है, अरावली की पहाड़ियों के बारे में बताया है, और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, जिसे चट्टानें भी कहा गया है। कहते हैं, डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द एज ऑफ दीज माउंटेन? क्या आप समझ सकते हो या जान सकते हो डिफरेंस होता है इसके अंतर क्या करना? एज होता है इसकी आयु में, माउंटेन्स होता है पर्वत की। तो माउंटेन जो है पर्वतों की आयु में कितना डिफरेंस है, जो इंडिया की अरावली है और नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज है। लेट्स कंटिन्यू बेटा। The Aravallis are old fold mountains, while the Rockies are young fold mountains. अरावली की Look at this पहाड़ियों volcano. The molten lava, ash, dust and cinder from within the deep earth is coming up through the vent and then erupting from the crater. The erupted materials build around the vent. This continues for several years and volcanic mountains are formed. Mount Fuji in Japan and Mount Peel in the West Indies are some of the volcanic mountains. What happens when cracks develop in a wall? The part of the wall between the cracks might sink, leaving some parts of the wall still standing. Similarly, when cracks or faults occur in the Earth's crust, the land between them sinks. The parts that are left standing on either side form the block mountains. Such mountains are steep with level surfaces, like the Vosges Mountains in France and the Black Forest Mountains in Germany. The importance of mountains. Mountains do a whole lot of good by just standing around. Rivers usually originate in the mountains. Mountains provide an ideal environment for the growth of flora and fauna, thus giving fuel, food, and shelter. Mountains play important roles in creating reservoirs for irrigation, generation of hydroelectricity, and tourism. Mountains also impact the climate of nearby regions. In India, the Himalayas block the monsoon winds, thus causing rainfall in several parts of the country. The Himalayas also protect us from the cold winds of Central Asia in winter. Thus, mountains are a very important part of the Earth's landscape. Click on the thumbnails on the left side of the screen to know all about mountains. तो तो माउंटेन्स के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है।
वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, नेक्स्ट इज आवर इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स कैसे हैं? ये पहाड़ है, ये हमारी नदियों का, पहाड़ों से नदियाँ भी निकलती हैं, ये ठंडी पवनों को आने से भी रोकते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक है। ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पर हमें वनस्पति और जंगली जानवरों के बारे में मिलता है सब। रिजर्वेस और फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी पानी इकट्ठा किया जाता है। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पैदा की जाती है बड़े बड़े बांध बनाकर। टूरिज्म, यहाँ पर पहाड़ों पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ नियर बाय एरियाज, यहाँ पर जलवायु भी प्रभावित करती है। लेट्स रिकैप, देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है इसे। ये है आपका रिकैप। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखें। ये है आपका माउंटेन्स के बारे में समरी। इसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, फीचर्स देखिए, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, क्लाइमेट गेट्स कोल्डर एट हायर एल्टीट्यूड, नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन इनहेबिटेशन, स्टीप स्लोप दैट डू नॉट सपोर्ट फार्मिंग, लेसर ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी। तो टाइप्स हैं हमारे माउंटेन्स के, फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग माउंटेन्स, वोल्केनिक एंड ब्लॉक माउंटेन्स। इम्पॉर्टेंस क्या, ओरिजिनेटेड पॉइंट फॉर रिवर्स है, फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ रिजर्वर्स और फॉर इरिगेशन, फैसिलिटेट द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हेल्प्स इन डेवलप टूरिज्म और इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय रीजन। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। प्लेट्यू और प्लेन्स के बारे में, मैदान के बारे में रिवाइज करेंगे हम। Looking out from the airplane window, you would see different landforms like hills, mountains, plateaus, and plains. Elevation and slope makes landforms like plateaus and plains different from the other. Just like mountains without peaks, plateaus are flat-topped and elevated with one or more sides sloping steeply. Plateaus are known as the tablelands of the earth. They cover small areas of few square meters, or even areas as large as half the size of the United States. They may be formed by collisions between sections of the Earth's crust. For example, the Tibetan Plateau, called the roof of the world, was and is still being formed by these collisions. Plateaus are also formed by volcanic lava that cools and hardens over years. Lava repeatedly pours through fissures or long cracks in the ground with basalt, flooding the landscape
it slowly forms deposits thousands of feet thick, making the plateau. The Deccan Plateau in India and the Columbia Plateau in the United States are lava plateaus. Plateaus are very useful to man. The fertile soil of the plateau helps in cultivation. Plateaus also treasure in them gold and diamond mines. Some plateaus become scenic spots for tourists when flowing rivers form waterfalls. Look at the plain and you will see how flat it is. It could be extremely leveled, slightly undulating, or even rolling. Plains are known as the faces of the earth, as they cover 50% of continents, and they are also found on ocean floor. Are plains found on ocean floors too? Okay, students, so are plains found on ocean floors? Are plains found on ocean floors too? कहते जो मैदान है क्या महासागर के छत पर भी पाए जाते हैं, फर्श पर भी पाए जाते हैं. कंटिन्यू करते हैं वैसे. Yes, plains are found in ocean floors too. उसके फर्श का मतलब उसकी सतह पर Plains can be as small as several hundred square feet, or as large as hundreds of thousands of square miles. An example of a large plain is the Ganga-Brahmaputra plain in India बेसिन भी है. and the Great Plains in North America. Plains are formed where rivers and streams flow down mountain slopes, picking up sediments and larger stones or rocks into valleys. Water flows further away from the mountain base, depositing large rocks first, then smaller materials to form fan-like layer. These spread to thousands or hundreds of thousands of square miles, filling up the valley and form a plain. The soil of the plains is very fertile for cultivation. Also, since they are flat, people can easily build houses and roads on a plain. Plains thus become the most thickly populated regions of the world. Let's recall what we learned about the plateaus. Plateaus can be formed either by collisions between the section of the earth crust or by. Show answer. Volcanic eruption. Next question is, they are formed by fan-like layers of deposit.
northern mountains and the northern plains. Okay, students, take care, stay home, stay safe, beta.